Welcome back. This is MD Huzafa and today we'll be trying to solve one more problem of chi-square. ठीक है, तो chi-square का goodness of fit का एक और problem करते हैं हम लोग. So as you can see the question on your screen, ठीक है, the question says that there are four varieties of Drosophila. There are four varieties of Drosophila: grey and red, black and red, grey and scarlet, black and red. And they have told that कितना कितना अमाउंट में या कितना कितना फ्रीक्वेंसी में ये आपको एक जेनरेशन में पाया जाता है. ठीक है, सो इट सेज दैट द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, द क्वेश्चन सेज दैट द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रे रेड ड्रोसोफिला इज 362, ब्लैक रेड इज 128, grey scarlet is 122 and black scarlet is 44. Now the question says whether this distribution obeys the Mendel's law about second filial generation or not. ठीक है, तो हम लोग को ये पता करना है कि क्या ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये मेंडल का लॉ क्या था. इट स्टेट्स दैट 9:3:3:1 में सेकेंड फीलियल जेनरेशन डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. मतलब ये जो डेटा है इट शुड फॉलो दिस टाइप ऑफ रेशियो. ठीक है, सो हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या ये डेटा, क्या ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो है क्या वो ऐसा तरीके का कोई रेशियो फॉलो अप कर रहा है या नहीं. ओके, सो फॉर दिस वी कैन यूज chi-square. ओके, सो लेट्स गो अहेड. So first what we will be doing, we will be just adding up all the Drosophila, all the different types of Drosophila and find out what is the total number of Drosophila. So when we add this we get 656. The total amount of Drosophila of different types together is 656. So n क्या है अपना 656 है. Now ये 656 Drosophila actually it should be distributed in this type of ratio. Okay, this type of ratio. So let's try to distribute and see what will be the expected frequency. तो यहाँ जो expectation है, जो expected frequency है वो अपने expectation से निकलेगी, that is from the ratio. ठीक है, तो पहला का expectation क्या है? पहला का expectation है that it should be 9 portion out of total into 656. The second it should be 3/16 of 656. The third one should be again 3/16 into 656 and the fourth one should be 1/16 into 656. Now ये 16 कहाँ से आ रहे हैं? ये 16 ये सारे को ऐड करने से आ रहे हैं. जब भी बेसिकली हम लोग को कोई रेशियो में डिवाइड करना होता है कोई नंबर को, तो हम लोग क्या करते हैं, जो रेशियो है उसमें सब टोटल ऐड कर देते हैं, उसको डिनोमिनेटर में डाल देते हैं एंड सिमिलरली उसका एक एक करके न्यूमरेटर करके we get the share of each thing, each types. So let's see what is the expected frequency. तो इसको सॉल्व करने से we get 369, 123, 123 and 41. So now we know the observed frequency, we know the expected frequency. Now we only need three more columns, that is FO minus FE, FO minus FE square and FO minus FE whole square divided by FE. ठीक है, तो अब क्या निकालना है? FO minus FE, FO minus FE whole square and FO minus FE whole square divided by FE. Okay, so this is FE, this is FO. So 362 minus 369. क्या करेंगे? 362 minus 369. That is -7. -7 का square is 49. 49 divided by FE. That is 49 divided by 369. That gives us 0.132. Next is 128 minus 123. That gives us 5. 5 का स्क्वायर हो गया 25. 25 divided by 123. That gives us 0.203. Then we have the next difference is 122 minus 123. That is a difference of 1. स्क्वायर करेंगे अगेन 1,
and 1 divided by 123 is giving us the value of 0.008. Okay. Again, the next one is 44 minus 41. So the difference will be 3. 3 का square 9 and 9 divided by 41 is 0.219. ओके, अब नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट हम लोग ये लास्ट वाले कॉलम को ऐड कर देंगे. ठीक है, इट इज वेरी सिमिलर टू ऑल द टाइप्स ऑफ काई स्क्वायर व्हिच वी हैव डन. ठीक है, सारे सब में एक ही पैटर्न है. सो जब गुडनेस ऑफ फिट की बात आती है तो एक ही जगह प्रॉब्लम होती है, दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है. अगर रेशियो में तो रेशियो में निकालना है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर से है तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर से निकालना है. ठीक है, तो यहीं पे कैच होता है, यहीं पे लोगों को प्रॉब्लम होती है. सो व्हेन वी विल ऐड ऑल दीज थिंग्स वी विल गेट 0.563. 0.563. ओके, इसको अगर हम लोग ऐड कर देते हैं ये सारे नंबर्स को तो वी गेट 0.563 which is the value of chi square. So chi square equals to 0.563. Okay. Now again we have to find the df. As I told you, यहाँ पे df कैसे निकालेंगे? It will be the condition minus 1. How many conditions are there? There are 4 conditions. That is 4 minus 1. That gives us the df of 3. तो अपना df कितना है? 3 है. Now let's check the critical value for the chi square at 0.05 level, df3. So the critical value for chi square at 0.05 level for df3 is basically 7.82. कितना है? 7.82 है. Okay, so again we can see the calculated value is very less as compared to the critical value or table value. So the null hypothesis will be failed to be rejected. Correct? क्या होगा? Failed to be rejected. Correct? So null hypothesis क्या है? Now what is null hypothesis and what is your alternative hypothesis? So the null hypothesis in this case will come from the question. अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है that do the data have a goodness of fit with Mendelian 9:3:3:1 distribution? क्या Mendelian 9:3:3:1 distribution के हिसाब से मेरा observed frequency है या नहीं है? So the null hypothesis will be that it is according to Mendelian 9:3:3:1 distribution. That is H naught is data is following Mendelian 9:3:3:1 distribution. ठीक है, and the alternative hypothesis will be data is not following Mendelian. Okay, so Mendelian 9:3:3:1 डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो वैसे ही लिख देंगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में कि नहीं कर रहा है. ओके, सो सिंस मेरा क्या है, कंप्यूटेड वैल्यू छोटा है एंड क्रिटिकल वैल्यू बड़ा है, सो वी विल से दैट वी फेल्ड टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाए. इसका मतलब मेरा जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आ रहा है ड्रोसोफिला का, दैट इज एज पर द डिस्ट्रीब्यूशन विच इज प्रपोज्ड बाय मेंडल्स. मेंडल ने जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रपोज किया उसी के हिसाब से है. ओके, सो यू विल बी फाइंडिंग मेनी ऑफ द सॉल्व्ड सम्स इन द अटैच्ड पीडीएफ इन द कोर्स.